Sunday marked the 138th episode of Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat and the first episode of the new year. On this occasion, the BJP Chailam Mandal's 40 number booth committee organized a Mann Ki Baat listening program at Bishramganj Sachin Debarma Smriti Kalakshetra, attended by Chief Minister Professor Dr. Manik Shah. The CM inaugurated the program by paying floral tribute and lighting the lamp, after which all presented listened to the Prime Minister address. Addressing the gathering later, the Chief Minister criticized the Congress, CPIM and Tripura Motha, alleging past atrocities against women and warning that such incidents will not be tolerated. He said the government is providing Rs 5,000 to community heads to help maintain social custom in tribal areas and stressed that the government wants all tribal communities, including smaller ones, to prosper. Speaking on Chailam's inclusion under a Nagar Panchayat, he said urban status would accelerate development and no village committee would be included under it, adding that the matter needs proper consideration. Nagar Panchayat এর মধ্যে কি প্রবলেম? আমি তো পিসি নিচ্ছি না এখানে। এখানে তো পিসি নেওয়া হচ্ছে না। এখানে সমস্ত যে জিপি গুলো আছে সেইগুলো নিয়ে একটা নগর পঞ্চায়েত হচ্ছে। উন্নয়নটা হবে কি করে? না, যদি আমাদের খবরদারিটা চলে যাবে। আমরা নগর পঞ্চায়েত করব, এখানে তো সবাই থাকে। নগর পঞ্চায়েত করলে যখনই কিছু একটা হয় তখন তার ডেভেলপমেন্ট হয়। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তার পয়সা আসবে, এই এরিয়া ডেভেলপমেন্ট হবে। এগুলো আমি বলবো যে আপনাদের আজকে এগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার। এগুলো বসে আপনারা কথা বলুন সবার সাথে। আমি মন্ডল প্রেসিডেন্ট। On National Voters Day, the Chief Minister told reporters that the Prime Minister inspires youth to take initiative, which begins when they become voters. He said even a single vote can bring major change. Congratulating new voters, he urged youth to compare the past and present governance of the state and choose leaders and parties who will lead both the state and themselves towards prosperity, paving the way for a developed Tripura and a new India. इनको सोचना चाहिए इस राज्य किस तरह पहले चला था और अब कैसे चल रहा है। डिफरेंस देख के आप ये वोट उस पार्टी या उस व्यक्ति को आप चुनिए ताकि वो जाके आने वाले दिन राज्य को समृद्धि के पद पर लाए और इन रिटर्न आपको भी समृद्धि हो, राज्य को भी समृद्धि हो, देश का समृद्धि हो, एक नया त्रिपुरा बने, एक नया भारत बने, विकसित भारत बने। और ये एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खाली वोट खाली देना नहीं है। इसलिए आप 18 साल के हो गए हो, ये आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप भी मेन स्ट्रीम में आप आगे हो, देश को बनाने के लिए, राज्य को बनाने के लिए। ये आज का दिन से आपका किंतु शुरू होगी सर। A large number of BJP workers and supporters from the Chailam area attended the program. Tight security arrangements were put in place across Chailam in view of the Chief Minister's presence. Bureau Report, Fact Finder.